this evening. I just hope that you have a great time when we are celebrating and also launching a portal which I believe has a lot of possibility to become a platform for like-minded audience, like-minded people who can come, watch a film, share their ideas, review it, and create a community, which is vast, which is like-minded, and which is willing to see content-driven film, and that's why I am with them. Since the first day Abhay met me, I realized that this portal has such a big future if all of us, without any selfish reason, come forward and start supporting it. But this is what we lack today: a platform for the people who like certain kind of cinema, people who like content-driven films, people who like to see short films by so many filmmakers, so many young filmmakers who are just churning it out every day, but we don't get to see them. And documentaries, there are no ways that one can source it out and go ahead and watch them. But very few people know that those documentary filmmakers, they toil so hard, they put in their sweat and blood in making one fantastic documentary. So this is a privilege. I mean, we are getting an opportunity to premiere Burman's documentary on our portal. So movies.com is an endeavor for me, and I urge everybody to support it. Thank you very much. And African rhythms and instruments, and all musicians from there. None of the Indian instruments or musicians accompanied him. So in those days when we had absolutely no exposure, he had the capability to go there, compose an album. By the way, he recorded in 10 days flat with Francis Ford Coppola's one of his recorders in 10 days flat. And as Filmfare reported in 1982, the album was a bestseller in United States. It was also released in India. Absolutely. So that for me is Rahul Dev Burman, R D Burman, or Panchamda. You'll have to excuse me because I will be calling him Pancham many times. Not that I don't respect him, but a lot of us simply love him. We just dropped the R. He's Pancham. It's a very sweet name. Thank you so much for being here. I think it's a very, very special evening, and I am thrilled to see the people who are here. And I don't like to talk much, so if you're going to talk too much to me, you don't have an option. I don't think you have an option. ये मुझे बता करके भेजा गया है कि तीन चार कुछ बातें ब्रह्मा से मैंने फिल्म भी उसी तरह से बनाई है, where you others come out with the most fantastic things about Panchamda in the film. Yes, I have some idea about how to get that out, I can say now after so many years. But other than that, let's move very fast with this little interaction. I can understand what you are trying to hint at, but we still want to know a couple of things. Sure. First of all, I think all of us would like to hear from you. What is it that we look forward to in knowing Pancham? What is knowing Pancham all about? Okay, so in short, when that film Pancham Manmix was made and it was screened, it went to about 40 international film festivals. It went on becoming a very loved film, so to say. And at every screening, I would be asked that, so what are you doing with the material that you have shot? We hear it's 100 hours plus, and what are you going to do with that? Your film is less than 2 hours, so what? And at that point of time, I was so full of, almost 1.5 years of edit work that I said that we'll see. But after some time, when I started seeing a lot of those rushes, I really felt that it was absolutely priceless material. And at the same time, it was not easy because 100 hours, bringing it down to any manageable length, something that can reach people, was difficult. So another 6 months, 8 months went with a lot of associates, a lot of people,
working on it, and when it became 15 hours, I said, wow, this looks good. When I said, let's do better, so we did it to 12 hours, then to 8 hours, then to 7, finally 5.5. And I said that if I go to make a film again out of that, probably I can make a 1 hour film or a half-hour film. And a lot of things which look priceless will again get left out for the same reasons that they got left out in the first film, that it doesn't fit into the structure, into the flow, sounds like repetition sometimes, but they are not, because it's different people's perspective, and many of them who have worked with him or who can understand and interpret him in a very, very interesting way. So that gave birth to Knowing Pancham of 5.5 hours, which was absolutely, precious material. And I remember our chief guest tonight, Asutosh Gavarikar, meeting him around the same time when he said that he saw the film and his, love and passion, everything got kind of refreshed. It was like a refresh button, and I said that, well, I to you. And by the way, अगर किसी को लग रहा हो कि हम भाई हैं तो ऐसा कुछ है नहीं. अब ये कुछ चीजें कंट्रोल होती नहीं. अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि पंचमदा के बारे में आज की शाम बहुत सारी बातें होंगी, और I actually maintain that we as Pancham admirers and even Panchamda, he's lucky that a film like this got made on him, and I'm saying that very, very humbly, Brahmanan, because we have a lot of people here who feel the same. We are all waiting eagerly, Brahma, for your next venture, and that's something I'm going to reveal tonight. It's going to be a film on a similar but a very different structure, in a biopic, documentary film on Jagjit Singh. The name of the film is Kaagaz Ki Kashti. मेरा सवाल ब्रह्मा आपसे ये है कि अब आपने उस फिल्म की भी शूट काफ़ी कंप्लीट कर ली है, और नोइंग पंचम इस जर्नी में काफ़ी आगे हम आ चुके हैं. जगजीत सिंह और पंचम, tell us about any similarities that you see, any perception that you have. Not really. The story of Jagjit Singh film is different. Of course, it took me 7 years to think of making a film on Jagjit Singh. Finally, I brought myself down. Even that's now a year and a half in the making. Another some time to go. Even my single day does not go past without listening to R D Burman in the morning and me before going to sleep. Even for me, when I say the words R D Burman, the name R D Burman, what comes to my mind is, I was thinking, I think what comes to my mind is, because R D Burman means that to me, and I think, I was also thinking while I was listening, why this mnemonic? I think it's dynamic, it's very energetic, there's got a suspense element to it, it's also celebratory. And I think all these qualities are very representative of Panchamda. And for me, like most of us, grown up with R D Burman music, when I became an actor, I had the honor to interact with him once. In fact, I had the honor of also lip-syncing to one of the songs that he composed. या आशुतोष, मेरा आज की शाम काम इंटरजेक्ट करने का ही है. अब यहाँ से आप कहीं और ना चले जाएं, ये कहानी पूरी होनी चाहिए. हम लोगों ने, मेरे ख्याल से सिर्फ ब्रह्मा और मैंने ये बात आपसे सुनी है, and you mentioned about, you're talking about Indrajit. We would like to hear, we would like everybody to hear about your interaction with Panchamda, which was before the movie was made. That's a very interesting story. If you don't mind, if you can please share it. It's a very small story, but it's something that left a very lasting impression on my mind. In fact, when I look back now, I feel that that interaction, which is very, very brief, for me, is what Panchamda is Panchamda's quality, which is apart from all the genius aspect of his creative space. I was a struggling actor, and I went to Rose Movies to look for work. And when I went to the office, Rose Movies was the office which was, its company started by Mr. Ramesh Bahel, the late Ramesh Bahel. And he's the maker of Jawani Diwani, Kasme Baade,
And I had heard. आशुतोष, रमेश बहल जी के ऑनर में एक बात मैं कहना चाहूँगा. He is probably, this is the only director, music director pair in this country who have worked together in each and every film that this director ever made. They worked together in almost 11 or 12 films. Yes. All by themselves. So when I went to the office, I had no appointment, and I decided to just push my way through. So the person asked me outside, "You have an appointment?" And I said, "Yes." I lied. The person looked at me surprised, looked up and down and said, "This is struggling actor. He has an appointment with Mr. Ramesh Bahel. How is it possible? Let me check." So he went in, checked, and came out and said, "Okay, you should wait for." And asked to wait. That I also got taken aback by that. Sachin ji, Namaste, Ketan ji. I had just finished a film with Mr. Ketan at that time called Holy. So that was my calling card at that time. After 10 minutes I was called in, and I entered Ramesh Bahelji's room, and behind the desk was Mr. Bahel, and in front of him, opposite him, were two people, R D Burman and Mr. Kapoor. And I thought maybe now Mr. Bahel, who I'm seeing for the first time, I look at Mr. Burman and I'm like, oh my god, that's R D Burman. And of course, Ranveer ji, one had seen his movies. And I looked at Mr. Bahel and said that I've heard that the casting is on and I've come for the role. So Mr. Bahel looks at me, and he looks at Pancham and says, "Iska kya kare?" So Pancham promptly looks at me. He's seated. He looks at me and says, "Iske naseeb mein likha hai." Ranveer Kapoor ji says, "Give him the role." And I didn't know what's happening as I stood there watching. And Mr. Bahel looked at me and said, "You're cast." Now, when I think back, I feel that Mr. Pancham was very instrumental in that immediate, "Iske naseeb mein likha hai," given the role. And I think that stayed with me forever. When I even performed to his song, that was an incredible experience of doing that. It was hair-raising almost every second day, because you were dancing and singing to a R D Burman composition. When I became a filmmaker, his music, his background scores became truly inspirational. They were a source of inspiration at all times, especially if you look at them. We all know it, but I'm just stating the obvious ones, Sholay or Arjun or something like that. The way background score, when it should start, when it should end, what should be the transition, what should be the changeover, it's immaculately designed. And it's just perfect at every juncture. So that has been a great source for me at all times. Coming to when I saw Ramanand's film, I just couldn't believe it first. My first reaction was that here is a music director who I know only because of his music. I am now getting an insight to the man by so many people who have worked with him. And about how he thinks, what is his energies, what are his highs, his lows, how is he approaching his lows. I thought the film had a hold on my heart, on my mind as I watched it. And what came to my immediate mind, which is when I said that for generations, this film will always be a reference point. Because every generation that's coming in, which is blossoming, mushrooming, they're all becoming the fans of R D Burman. And they're just reacting to his songs, to his music. So this film will kind of bridge the gap for that. And I think we'll be eternally indebted to him. We would be, as your name suggests, you have actually given us the supreme honor, the supreme happiness. So I congratulate you once again. And thank you for making me a part of this. Thank you. Thank you very much, Ashutosh. In fact, we had a small surprise for you as well, since you mentioned the Indrajit song. Our musicians will be playing that. Yes. At least the music, the instrumental piece. And you will be for music. You have that bam bam bam. Yeah. Absolutely. So, with this, without much ado, I would really like to request Ashutosh and Brahma to please unveil Knowing Pancham and launch this absolutely new version 2.0 for the world.
Thank you very much, Ashutosh. And I would actually request, we have the honor of having some of Panchamda's very close team members, musicians, singers who are there with us tonight. I would really request them to please join us on stage. मैं सबका नाम तो नहीं लूँगा, मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा, पर मैं ज़रूर जानता हूँ रोनू जी, केरसी बाबा, नितिन जी, सचिन जी. We would really request you to please come on stage and join us in this launch. And absolutely anyone else we have missed, my apologies. But anybody who has really been, who's worked with Panchamda, we really welcome you on stage. We want you to be here, please. So some of them will be performing this evening, by the way, on this very stage. So we look forward to that. So we would like to offer you a memento, a copy of the film. क्या दे रहे समझ में नहीं आ रहा। आप किसको दे रहे? रोल है ना? ले रोल है ना? हट कर। So while this is being distributed, so knowing Pancham, it of course has the national award winning film Pancham Unmixed. More than 5.5 hours of archival footage from the film, and a coffee table book titled Diamonds and Rust. Thank you very much, Ramda and Kelsi Baba and Nitin. Yes, thank you. सर क्यों आर डी बर्मन, क्या खास था आर डी बर्मन कि आपने उनको चुना, और 4 साल पहले भी हमने सुना था कि आपने सुना था? हाँ, क्यों, क्या खास बात? भाई मुझे तो लगता है कि आर डी बर्मन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनका कभी कोई एंड या लिमिट हो ही नहीं सकता है. सो इसी तरह की कुछ बात थी जो 5 साल पहले भी मैंने जो किया था, 5-6 साल पहले हो गया उसको, और उस समय वो एक फ़िल्म बनी थी. तो फिल्म बनी, उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा था, और जहाँ भी उसकी स्क्रीनिंग होती थी तो उसमें एक सवाल हमेशा आता था जो पूछते थे लोग कि आपने 100 घंटा शूट किया, 2 घंटे की फ़िल्म बनाई, तो बाकी जो इतने प्राइसलेस मटेरियल होंगे वो कहाँ है. तो फिर जब बहुत दिनों के बाद मैंने देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये हमारे हार्ड ड्राइव में क्या कर रहा है, इट शुड बी इन द पब्लिक डोमेन, एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. और फिर जा कर के 6 महीना करीब लगा करके उसे एडिट करके फिर जो मटेरियल हमने कलेक्ट करना शुरू किया, वो 100 घंटे में से वो 15 घंटा आया, फिर 8 घंटा आया, फिर 7 घंटा, फिर 5 घंटा. 5 घंटे पे हम लोगों ने फ्रीज़ किया, और हमने ये सोचा कि ये हम शेयर करते हैं एक तरह से, एक तरह का वीडियो बुक कह सकते हैं इसको, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, जो आर डी बर्मन के ज़िंदगी के डिफरेंट पहलू पे जो लोगों ने बोला है, जो हमने फिल्म में यूज़ नहीं किया था, और बहुत ही सटीक, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, वो हमने कलेक्ट करके लोगों तक इसमें पहुंचाया है. सो इट्स द होल कलेक्शन इज़ कॉल्ड नोइंग पंचम, विच हैज़ दिस 5.5 hours was absolute wealth. It also has a coffee table book called Diamonds and Rust, जिसमें जो कि हम उस समय में मैं डायरी नोट्स जो अपना लिखा करता था म्यूज़िक के ऊपर, आर डी बर्मन के ऊपर, उन सब के ऊपर, उसको मैंने देखना शुरू किया कि व्हेन यू सी इट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ शिव कुमार शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, या किरसी लॉर्ड जी क्या बोल रहे हैं, या रोनू मुजुमदार ने क्या बोला है, या विशाल भारद्वाज ने क्या बोला है, तो एक अलग पहलू नज़र आता है. उससे आप एक और लेवल आप ऊपर जाते हैं. आप अगर देखते हैं क्विंसी जोन्स क्या कह रहे हैं, जॉन लेनन किस तरह से सोचते हैं, रूमी किस तरह से बात को रखते हैं या इंसान को समझते हैं या बताते हैं उसके बारे में, और जब हम उनको ये 3 अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त पहलू सामने निकल करके आता है अबाउट आर डी बर्मन.
आपके लाइफ में कुछ अनछुए पहलू भी हम इसमें देखेंगे या और आज आप यहाँ आप बहुत सारे अनछुए पहलू देखेंगे which is basically about a lot of about his personal stuff, his early childhood, his growth, his sitting room sessions जो legendary है, किस तरह से लोग उसके बारे में बातें करते हैं, समझते हैं, किस तरह से उनका creativity काम करता था. मतलब सब लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि पंचम दा was a genius, पंचम दा was well ahead of his times, हमेशा सुनने को मिलता है. मगर ये आपको एक थीसिस जैसा सामने बन करके आता है कि क्यों था ऐसा. Why do we say that R D Burman was well ahead of its time? Why do we say that R D Burman was so creative? Wow, R D Burman यार पंचम दा के जैसा एक म्यूज़िक चाहिए. मतलब कोई भी फिल्म मेकर नहीं है जो अपने म्यूज़िक कंपोज़र को एक बार कम से कम नहीं बोलता है, 100 सैकड़ों बार बोलता है, मगर एक बार कम से कम यार इसमें ना एक ये सिचुएशन में ये शोले वाला चीज़ एक पंचम दा जैसा कुछ करो, उसमें एक समता प्रसाद जी से जैसे उन्होंने तबला बजवाया था उस तरह का एक कुछ एक ब्रेक थ्रू आइडिया लाओ. तो ये क्यों होता है? Why is it that 20 years, 30 years after he had created such great music, we still have people going back and referring to those musical pieces? So वो क्या मैजिक था, वो क्या जादू था, क्या कहाँ से निकल के आता था, ये सारी चीज़ें निकल करके इसमें आती हैं. आज क्या होने वाला है यहाँ पे? आज आपने बहुत लोगों को इनवाइट भी किया है. आज तो हम ये जो एक नोइंग पंचम एक्सपीरियंस जिसे हम कह सकते हैं उसको हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं. 27 तारीख को उनकी बर्थडे है. ये उनका 76वां बर्थडे है. मतलब 75 साल उन्होंने पूरे कर लिए. एक प्लैटिनम निकल गया. मेरे हिसाब से ये दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अनदर प्लैटिनम फॉर हिम, because he is not someone who is going to grow old, he is not someone who is going to get out of public memory, and these are the ways in which probably हम उनकी याद को ज़िंदा रखते हैं और उनसे समझते हैं और सीखते हैं. क्योंकि बहुत सारी तो आज के शो में जनरली उनकी म्यूज़िक बजेगी, उनके बारे में कुछ बातें होंगी, इस फिल्म का एक हम अनाउंसमेंट करेंगे, कुछ हम क्लिप्स दिखाएंगे और लोगों तक हम पहुँचाएंगे. लास्टली मैं जानना चाहूँगा कि आपके दिल को सबसे खास कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल की करीब एकदम जिसे आप हमेशा इंस्पायर्ड हो? कम से कम तो 20 गाने होंगे जो सर गाने हम आप सुनने भी जाएंगे. मेरा तो फेवरेट बहुत सारा है, मगर वो क्या मतलब आप मुझे गाना चाहते हैं? हाँ, एक गाना है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है हमेशा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना. कुछ तो लोग कहेंगे. सबसे बड़ी बात जो उनके गाने की होती थी वो थी उनके गाने की चलन. जो बहुत सारे लोग उनके बीट्स के पीछे भागते थे कि पंचम के बीट्स ले लो, पंचम का बीट्स, रिदम उनका अरेंजमेंट, मगर जो सोल उनके गाने में था वो था उनके कंपोजिशंस का चलन. और जो लोग ये समझ पाए या समझते हैं वो उससे बहुत कुछ सीखते हैं. लास्टली मैं जानना चाहूँगा कि आज के लोगों को म्यूज़िक की कितनी समझ है? पंचम दा का युग चला गया, बहुत से लोगों का युग चला गया, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो म्यूज़िक को किस तरह देखती है? आपके भैया आज का जनरेशन जो है वो मुझे लगता है कि कुछ इतने अच्छे म्यूज़िक आ रहे हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ. कभी कभी इतना टैलेंट है कि मैं हैरान हो जाता हूँ. और चूँकि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पे नेट और यूट्यूब और टैलेंट शो और ये वो सब कुछ कोई भी कुछ भी कर सकता है. उसका फ्लिप साइड भी है कि कोई भी एवरेज भी आ जाता है सामने, मगर उसका बेहतरीन पहलू जो है वो ये कि इतने सारे टैलेंट निकल करके सामने आते हैं जो पहले बहुत मुश्किल था. सो आज के हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग समझ है काफ़ी लोगों में. बहुत सारे लोगों में बिल्कुल ही समझ नहीं है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते. मगर टैलेंट बहुत है, कुछ बहुत ही अच्छे गाने भी बन रहे हैं. मगर एक जो चैन का गाना था पहले जिसमें एनर्जी और चैन का कोई रिश्ता नहीं है. आप बहुत ही एनर्जी हो सकता है और फिर भी आप आराम से. सो ईज़ ऑफ म्यूज़िक हैज़ गिवन वे टू रेस्टलेस म्यूज़िक समटाइम्स. और बहुत समय लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है टू क्रिएट, और लोग शायद बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं कि
क्रिएटिविटी का एक प्रोसेस को हम अलाउ करें कि वो बहुत ही अच्छी चीज़ निकाल करके आए। शायद पेशेंस की ज़रूर कमी है आज, कि जो तीसरा अच्छा चीज़ हमको दिखता है उस पर हम बोलते हैं कि बस ये हो गया, जबकि हम अगर थोड़ा और रुकें, पांचवा अच्छा चीज़ मिले तो वो पांचवा चीज़ शायद बहुत ही खूबसूरत निकले। तो यही मैं कहना चाहूँगा आज के म्यूज़िक के बारे में, मगर टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहले तो म्यूज़िक की बात हो रही है, यहाँ पे पूरा माहौल म्यूज़िक का है, तो आप म्यूज़िक को कितना पसंद करते हो, किस तरह का म्यूज़िक आपको पसंद है? आई वुड से कि मैं बहुत बड़ी म्यूज़िक लवर हूँ। इतनी जैसे ही मुझे पता चला कि आर डी बर्मन का उनके सॉन्ग्स प्ले होने वाले हैं, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। एंड आर डी बर्मन के सॉन्ग्स पर ही आई हैव लिटरली ग्रोन अप, और उनके सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद हैं, रोमांटिक हो या सेंशुअस हो, तो उनके हर तरह के सॉन्ग्स उनके रहे हैं, तो आई एम रियली एक्साइटेड। कौन सा ऐसा सॉन्ग रहा है आपके लाइफ में जिसने आपकी लाइफ को ड्राइव किया है? नहीं, ऐसा स्पेसिफिकली कोई सॉन्ग नहीं रहा है, बट आर डी बर्मन के स्पेशली जो ये शाम मस्तानी हो, या बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं उनके जो कि मतलब जिनके साथ हम लिटरली वी हैव ग्रोन अप, तो बहुत अच्छा रहेगा कि वो सारे सॉन्ग्स वापस सुनने को मिलेंगे। कुछ गाने का भी शौक रखती हैं? हाँ। लाइफ में तो हम चाहेंगे कि कुछ गुनगुनाए आज कैमरे पर हमारे सामने। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जाए। ये आर डी बर्मन का ही सॉन्ग है। अब हम एक नए ज़माने का भी गाना सुनना चाहेंगे आपसे। नए ज़माने का भी? कोई किसी भी मूवी का। मैं तेनू समझावा कि न तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि न तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतज़ार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, जान मेरी। प्रोफेशन छोड़? बिल्कुल नहीं, प्रोफेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इट्स जस्ट माय हॉबी। अच्छा, सेकेंडली अब आप क्या कर रही हैं इस समय? मतलब बालिका वधू आपने ड्रॉप किया शायद, और अभी मैं ऑडिशंस दे रही हूँ, मीटिंग्स चल रही हैं, एंड आई रियली होप कि यू ऑल विल सी मी ऑन स्क्रीन वेरी सून। कैसा रहा एक्सपीरियंस पीछे जो भी आपने काम किया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। It was lovely working in Balika Vadhu, and I hope to be back on screen very soon. Thank you very much. Thank you.